પબ્લિશ કરી દે તો 2-3 થીસીસ થઈ જાય છે અને એ જ્યારે ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક એસોસિએશનમાં થિયરીનું આસ્પેક્ટ જ્યારે હોય અને એમનું પેપર હોય તો સાહેબ જે એમ કહી શકાય કે વેલ નોન ઇકોનોમિક્સ બેઠા હોય એને પણ શેખ સાહેબ માટે રિસ્પેક્ટ છે અને મેં જોયું છે અને આવા વ્યક્તિ આજે આપણી સમક્ષ છે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે ગુજરાત ઇકોનોમિક એસોસિએશનમાં છે એનો વિશેષ આનંદ છે અને સાહેબ હું ખરેખર આપનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છું અને આ તબક્કે હું ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક એસોસિએશનના સેક્રેટરીને તો ક્યારેય ન ભૂલી શકું કારણ કે તો મારા પરમ મિત્ર છે અને અનિલ કુમાર ઠાકુર પણ ખાસ આપણા કાર્યક્રમ માટે ઉપસ્થિત રહ્યા છે તો એમનો પણ આપણે એક વખત જોરદાર તાળીઓથી સાથે મારા બીજા પણ પરમ મિત્રો બધા દેવેન અવસ્થી કે જેઓ કાનપુરથી છે એની સાથે સુધીર શર્મા જે ગ્વાલિયરથી છે કે શ્રીવાસ્તવ છે પછી કાયંદે પાટીલ નાસિકથી SS ચૌહાણ છે કે જેઓ આગ્રાથી અહીંયા આવ્યા છે એવા આભા મિત્તલ દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી છે આવા ઘણા અરુણ પ્રભા ચૌધરી છે ઉદયપુરથી આ બધા ખાસ આપણા આમંત્રણને માન આપીને પ્રથમ વખત ગુજરાત ઇકોનોમિક એસોસિએશનના કોલેબોરેશનમાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે ગુજરાત ઇકોનોમિક એસોસિએશનના પણ પરમ મિત્રો સૌ કારોબારી સભ્યો ભરતભાઈ શાહથી લઈ શ્રીનિવાસ રાવથી માંડી વાડીભાઈ સાહેબ માટે તો મને એટલે રિસ્પેક્ટ છે કે આજે હું જે કંઈ ઊભો છું ને એની પાછળ પ્રત્યક્ષ નહીં પણ પરોક્ષ રીતે એમનો બહુ મોટો સહયોગ છે. એનું કારણ એ છે કે મારા ધર્મપત્નીને એમને ભણાયા છે. આપણા સૌને ખાસ ઉપસ્થિત છે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. is the former president of Indian. कि भाई आज के हमारे अतिथि विशेष का सम्मान करें. Dr. A.D. is the present vice chancellor of Himachal Pradesh University and a former professor of economics at Rani Durgavati University. He is also the former vice chancellor of Desh Pratap Singh University, Rewa, and Mahatma Gandhi Children's. हमारे आमंत्रित मेहमान का सम्मान करें. आइए आगे आइए सर. आइए आप आगे आ जाइए. Is a past president of Indian Economic Association. आभार सर. हमारा 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा था इसमें द्वितीय दिन में जो 2 सत्र चले थे और उसमें जो रिपोर्टियर थे और उन्होंने जो पूरे दिन प्रोग्राम को संचालित किया था प्रोफेसर बिमल शाह सर. On and off diets, I, Bimal Shah, Professor at International Health Business Management Institute, Anand Agricultural University, presents the report on the technical session on the theme on capitalism. Professor Laliwala, being a distinguished scholar and enriched with decades of experience, has made the clarity of concept underlying in the theme with his affirmative and proclaimed statements.
Professor Laliwala has, in the beginning, bifurcated capitalism into two doctrines of economic theory, that is classical capitalism and neoclassical capitalism. He pointed out that the history has recorded the birth of capitalism in the 16th century, and after 1880, monopoly capitalism or finance capitalism has emerged. He elaborated the journey of capitalism from small-scale production capitalism of Adam Smith's time to monopoly capitalism of Karl Marx's era, and monopoly capitalism with supremacy of debt finance and speculation of modern or neoclassical times. He extended his argument further and given equations to understand the clear distinction between classical capitalism and neoclassical capitalism. He expressed CM-C- model for classical capitalism, where labor produces commodity, sells the use value of this commodity in exchange of money, and buy bunch of other commodities which combined provide more use value than the commodity it produces. Hence, in this model, both buyer and seller are forming win-win solution, but on the contrary, the neoclassical capitalism, which is represented as M-dash model, pays money to labor and produces commodities which can be sold at the higher price than the wage paid for the laborer. In this model, a capitalist creates surplus, that is M-dash, by employing labor, but did not pass on the benefits to the laborer, and hence it creates win-lose situation. Professor Laliwala has expressed his firm belief that the basic foundation of capitalism is exploitation, and this exploitation, whether of labor or nature, has created two world wars. With the example of USA economy, GDP growth and debt growth statistics, Professor Laliwala has proclaimed that being a leading capitalist country, USA has reached to the point where its total debt equals to world GDP. Most of the countries of the globe have financed USA's public debt, and hence any financial instability in US economy will cease to create disturbances in small and poor countries. The countries who had financed US public debt. Professor Laliwala, in his concluding remarks, stated that true democracy can only be prevailed in socialist economic system, and the socialist economic system can be feasible only in the democratic system. He intended that India is facing imperialistic capitalism, and in order to enforce true democratic environment in India, the policy makers need to establish most socialistic mechanism. Professor Sheikh sir, being the chairperson of this session, has thanked Professor Laliwala for sharing his wide spectrum reading and entitled him as a rainbow economist. After Professor Laliwala's keynote paper, Professor Sheikh has invited Professor Niranjan Pandya, a retired professor of economics at the Department of MS University of Baroda and the past president of Gujarat Economic Association, to express their views on the theme. Professor Pandya has outlined the chronology of appearance of Karl Marx and Schumpeter along with Keynes. In his initial comments, he discussed the history of development of the thoughts on capitalism and socialism and stated that Ricardo has limited his analysis by concluding capitalism reaching to a stationary stage, while it was Karl Marx who, with his dialectical method of analysis of history, has studied the capitalism thoroughly and argued that capitalism will collapse because of its internal contradiction, and that internal contradiction will give birth to organized labor attack, which ultimately creates communism in the society. Professor Pandya has elaborated the views of Schumpeter on capitalism and socialism and stated that optimistic view of Schumpeter, empowered by the concept of innovation as a driving force for business cycle movements. Professor Pandya has stated
the work of Professor Paul Sweezy in order to put his arguments on the socialism. Professor Pandya further argued with the help of USA economic GDP growth statistics and stated that after World War II, the GDP growth rate of US economy has grown at the 5% CAGR, and also he pointed out that during 1981 to 2000, that is the 2 decades, it has been seen that there was no increase in the per capita income of the countries of Africa, and economic historians record it as the last 2 decades. Further elaborating his views on capitalism, Professor Pandya has stated that 1929-32 was called as Great Depression, while 2007-09 is now called as Great Recession. And USA's public debt statistics are indicating that most of the poor countries in the world have financed USA's public debt, which is alarming situation for world economic order. During his explanation on the theme, Professor Pandya has informed the House about monthly review, that is MR, published by Paul Sweezy, and advised the researchers and scholars of the field to regularly get updated with MR. Professor A.A. Sheikh thanked Professor Pandya for his informative presentation and praised his stand of openness of ideas in order to understand complexity of economic system. The last key paper was of Professor John Parmar, and in his paper, Professor John Parmar has explained the methodology to rank the countries in order to their democratic system, and he elaborated that the true democracy can only prevail while there is a true concept of socialism prevailing in the economy. In my concluding remark about the session on capitalism, socialism and democracy, would like to state that we have recorded total 30 number of papers, among which 10 papers were presented by the teachers while 20 papers were presented by the students. So, in total, the theme which was on democracy basically has experienced us to have democracy in paper presentation also, and I would like to thank the students who have extensively participated in order to make this session more enriched. Thank you, sir. Social protection in Gujarat theme ઉપર આજ હોલમાં પ્રોફેસર ડોક્ટર કિરણભાઈ પંડ્યાના અધ્યક્ષ સ્થાને મારે અહેવાલ લેખનનું કાર્ય કરવાનું હતું. સવારે 9:30 વાગે આ કાર્યક્રમ શરૂ થઈ ગયો હતો. સેશનમાં ડોક્ટર ગૌરાંગ રામી, ડોક્ટર હેમંત શાહ અને ડોક્ટર તુષાર હાથીએ કી પેપર્સ રજૂ કર્યા હતા. ડોક્ટર તુષારભાઈ હાથીએ ગ્રામીણ શહેરી સ્ત્રી પુરુષ જેવા સંદર્ભે સોશિયલ એક્સક્લુઝન અને સોશિયલ પ્રોટેક્શન અંગેના ખ્યાલની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી. ત્યારબાદ ડોક્ટર ગૌરાંગ રામીએ સામાજિક એક્સક્લુઝન અને પ્રોટેક્શનના ખ્યાલના સાધ્યાંત અભિગમ સ્પષ્ટ કર્યો, અને આ અંગેની ચિંતા દયાનંદ સરસ્વતી, પૂજ્ય બાપુ અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એ લોકોએ અગાઉ એમના વિચારોમાં વ્યક્ત કરી છે. ત્યાંથી શરૂઆત કરીને અત્યાર સુધી તેમણે સારી રીતે થિયોરિટિકલ અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપ્યું હતું. ડોક્ટર હેમંતભાઈ શાહ સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય, વ્યક્તિગત અને સામુદાયિક સંદર્ભે સોશિયલ એક્સક્લુઝનનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કર્યો હતો. શિક્ષણ, આરોગ્ય અને માનવ વિકાસના આંકની બાબતોને પણ તેમણે આવરી લીધી હતી. ડોક્ટર રોહિતભાઈ શુક્લાએ ખૂબ સરળતાથી સામાજિક ઉપેક્ષા અને સલામતીના અભિગમને સ્પષ્ટ કર્યો હતો. ત્યારબાદ અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓએ સંશોધન પત્રો રજૂ કર્યા હતા. સૌપ્રથમ ડોક્ટર બીડી વરુએ વેદકાળથી વર્તમાન સમય સુધીના ભારતીય સમાજમાં સ્ત્રી સંરક્ષણ અને આત્મસન્માનના વિચારોને પ્રગટ કર્યા હતા. ત્યારબાદ પ્રાધ્યાપક કલ્પનાબેને સામાજિક એક્સક્લુઝન અને જાતીય વિષમતાનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો હતો. શિક્ષણ સંદર્ભે એક્સક્લુઝનના મુદ્દાને રજૂ કરતા તેમણે દર્શાવ્યું હતું કે કન્યાઓમાં પ્રવેશ દરમાં ક્રમશઃ વધારો થયો છે. તેની સાથે સાથે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો પણ વધ્યો છે, જે ચિંતાજનક છે. સામાન્ય જાતિની કન્યાઓની તુલનાએ એસસી એસટી કન્યાઓનો પ્રવેશ દર વધુ છે, એવા મુદ્દાઓ પણ તેમણે આંકડાઓ સહિત સ્પષ્ટ કર્યા હતા. ત્યારબાદ ડોક્ટર ભરતભાઈ શાહે સ્થાપનાથી અત્યાર સુધીના
ગુજરાતના સાધ્યાંત ઘટનાઓને રજૂ કરી નિરક્ષરતાનો વિશ્વચક્ર અને સાક્ષરતાના સમૃદ્ધિ ચક્રને આધારે સોશિયલ એક્સક્લુઝનના ખ્યાલને સ્પષ્ટ કર્યું હતું. ત્યારબાદ પ્રાધ્યાપક અમિતાબેન આચાર્ય અને મમતાબેન આચાર્યએ સંયુક્ત પેપર એ સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા એક સામાજિક કલંક છે તે સંદર્ભે રજૂ કર્યું હતું. પ્રાધ્યાપક શ્રી ચિરાગભાઈ અને રામદેવ પુત્ર અને શ્રી સુનિલ રાજપૂતે બાળકોના મુદ્દાને આવરી લઈ ડોક્ટર મુકેશ મિસ્ત્રીએ સ્વાસ્થ્ય પરિસ્થિતિના સંદર્ભે, પ્રાધ્યાપક હસમુખભાઈ જી દેસાઈએ માનવ વિકાસ અને ગુજરાતના વંચિતો સંદર્ભે, શ્રી મુક્તિ પટેલે સોશિયલ એક્સક્લુઝન ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ ગુજરાત રિયાલિટી ચેક, આવા વિવિધ શીર્ષકો હેઠળ આ દરેકે પોતાના ખ્યાલો રજૂ કર્યા હતા. શ્રી બીનાબેન પટેલે પણ સોશિયલ એક્સક્લુઝન એન્ડ સોશિયલ પ્રોટેક્શન અંગેનો તેમના અભ્યાસપત્રનો ખ્યાલ એ વિસ્તૃતે રજૂ કર્યો હતો. ત્યારબાદ શ્રી કૈલાસ સોની, ધવલભાઈ અને શ્રી પ્રદ્યુમન સામાજિક આર્થિક બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ સોશિયલ એક્સક્લુઝન એન્ડ સોશિયલ પ્રોટેક્શનનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો. ટોટલ 36 પેપરો હતા આવેલા અને અમારા સેશન દરમિયાન અન્ય 6 પેપરો આવેલા હતા. એટલે ટોટલ 42 પેપર્સમાંથી 19 પેપર્સ રજૂ થયા હતા. ચેરપર્સન તરીકે ડોક્ટર કિરીટભાઈ જોશી સાહેબે આ સંપૂર્ણ પેપરો રજૂ થઈ ગયા પછી જણાવ્યું હતું કે જે લખવા માટે પ્રયાસ કર્યો છે તે અભિનંદનને પાત્ર છે, પરંતુ વિષયને સંલગ્ન પરિપ્રેક્ષ્યમાં કેટલાક અભ્યાસપત્રો સુસંગત નથી અને સંશોધન પત્રના પ્રેઝન્ટેશન પણ એટલું જ મહત્વનું છે. માહિતી અને માહિતીના વિચલનોને જાણી અને તેને સ્પષ્ટ રજૂ કરવા વગેરે શીખ આપી હતી. અંતમાં શ્રી રોહિતભાઈ શુક્લાએ સંશોધન પત્ર લખવાની સાધ્યાંતર પ્રક્રિયાને સરળતાથી સમજાવી હતી. ટી બ્રેક બાદ શ્રી હિંમતભાઈ પટેલ સાહેબે તેમના વિચારો રિઝર્વેશન અને સોશિયલ એક્સક્લુઝનના રજૂ કર્યા હતા. થેન્ક યુ. President of the Gujarat Economic Association, Dr. Rohit Shuklaji, Secretary Mohan Bhai Patel, हमारा वीटू कानी में था और फॉर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एकेडमिक एसोसिएशन राजकुमार सेन जी, our good friend and Vice Chancellor of Himachal Pradesh University, Dr. Gideon Bajpai, Dr. Parmanand Singh ji, Alaknanda ji, my friend, other friend on the dais, members of the Executive Committee of the Indian Economic Association, Gujarat Economic Association, and above all, my younger brother and Secretary of the Indian Economic Association, Dr. Anil Kumar Thakur, delegates, members of the Gujarat Economic Association, participants and student friends. I deem it as a pleasure to stand before you because I want to use this platform to thank the members of the Indian Economic Association, of which Gujarat Economic Association is also a part, that is my feeling, for electing me as the Council President of the Indian Economic Association. And regarding this annual conference, 43rd annual conference of the Indian Economic Association, Gujarat Economic Association, the two themes are very good. One is capitalism, socialism and democracy. When we are forgetting about the socialism and socialistic countries, really it's a very good thing. And the other one is social inclusion or inclusive or exclusive policies, which is the current topic which is boiling in our country from the center to different states. And the different regional economic association, already in the Indian Economic Association we discussed the topic at length, and now we are discussing in a decentralized manner. But in different regional economic associations are also embracing that topic and we are discussing. Why I am specifically talking about this, and I want to make a comparison between, just I will take a few minutes only, between Andhra Pradesh government and Gujarat government. In Andhra Pradesh and Gujarat, in Andhra Pradesh Chandrababu Naidu and in Gujarat Narendra Modi, both came into power almost at the same period. 1996 Chandrababu Naidu, 1996 middle,
and 96 end or 97 beginning Narendra Modi. Both embraced reforms. And in the beginning stage, the pace of reforms is much higher in Andhra Pradesh, and we all know that the name that got by Chandrababu Naidu, not only in India, in World Economic Forum was great. But after 9 years, he lost his power, but in Gujarat, Narendra Modi is continuing. Especially I am taking the reforms in the power sector. When Chandrababu Naidu came into power, the first task he chose was the reforms in the power sector. Several new projects were started and old projects were expanded. And at that time when we are thinking that almost Andhra Pradesh attained self-sufficiency in power generation, then there is a change in the government. The new government announced free supply of power to the farmers. I am not against to that. I am not against the supply of free power to the farmers or industry, whatever it may be. But when we are giving it free, we have to think about the other sectors and the overall development of the state also. So by that time, Gujarat did not attain that much. Now, if you take Gujarat, Gujarat is a power supply state. And recently I learned that there are no subsidies in case of even to the agriculture, the farmers have to pay. That is what I learned from newspapers and other. So when the state is at it, when both the states started the reforms at the same time period, and when one state achieved a higher growth rate, and in Andhra Pradesh almost, now we are lagging behind in terms of growth and all that. So what is the factor? The bureaucracy is same in all the states. One political party, other political party will be in the power. So my feeling is that it is the commitment of the, or it is the political will and the bureaucratic commitment that leads to a part of growth in Gujarat. I am not praising Narendra Modi, why I am referring is the chief minister. I do not belong to any political party. I am not praising either BJP or a regional party or a national party. I am not against to that also. Why I am saying all this? A few years back, I shared a platform with Vidyasagar, I think at Udaipur, when I had this session on Rajasthan economy. Vidyasagar of IIM. Then I asked him, so as he also did considerable work in agricultural economics, why Gujarat is attaining a higher growth rate in agriculture, and why the similar areas in Rajasthan, Andhra Pradesh and other parts, they are not there. What he told is, whenever there is a problem, Narendra Modi used to come to IIM or some other institute. As he belonged to IIM, he quoted IIM along with the concerned officers, and he took their advice. And he implemented all those things. And what he used to say that I want the result. If you can implement, you implement. And some projects, he assigned the responsibility of implementation to the IIM. That is what Vijay sir required. So in that respect, this social inclusive and exclusive policies is highly relevant topic as far as the Gujarat economy is concerned. Prior to the elections, recent elections in Gujarat, I read articles in newspapers and magazines that Gujarat attained a higher growth rate. True, it is true. But there are high inequalities. Definitely as growth rate is high in the beginning stages, definitely there will be wide inequalities. Inequalities will increase. The same thing happened in Gujarat. So in that respect, if we can provide appropriate policies and conclusions, definitely I hope that Narendra Modi will implement these policies so that social as well as economic inclusion will take place in the Gujarat economy, and which ultimately turns a model to the Indian economy, to the other states. So here my submission to my colleagues or fellow economists is that whenever there is a good, any part, any state, whether it is
communist-led government or Congress-led government or some regional parties, when there is a coup, it is the responsibility of the center to adopt this policy. Why it took place? So even in our country, mainly because of the Russian and all that, now the recent Reserve Bank estimate is that we may achieve a growth rate of 5.5% or so. But I think the growth rate in Gujarat is not nearly 10%. Earlier it is around 11%. Even in this Russian period, maybe around 9 or 10%. Why it is happening in Gujarat? Similarly, take the social sector. So in the yesterday discussion also, we also heard Kerala is the foremost state as far as education and health aspects is concerned. Why it so happens in Kerala? Why not in other states? So if we take all these good things which are happening in some states, and if we implement all these things at a national level, definitely India will attain a faster growth rate, and we may exceed China also. Otherwise, whatever the human resources or whatever the demographic dividend, as explained yesterday in a evening lecture, it will become a pain, not a boon to the Indian economy. So with this few remarks, I thank the organizers for giving me the opportunity. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं गुजराती तो मैं अच्छी बोल नहीं सकता और इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, तो हिंदी में बोलने की मुझे आज्ञा चाहिए जो हमारी राष्ट्रभाषा है। मंच पर विराजमान अत्यंत सम्माननीय भारतीय अर्थशास्त्र परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर के मोहन राव जी, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर R.K. सेन जी, गुजरात अर्थशास्त्र परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रोहित शुक्ला जी, बहन अलकनंदा जी, ब्रह्मानंद जी, अन्य विद्वान, सम्मुख उपस्थित हमारे भारतीय अर्थशास्त्र परिषद के महासचिव और कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल ठाकुर जी, अन्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्यगण, चौहान साहब, अवस्थी जी, सुधीर शर्मा जी, के श्रीवास्तव जी, हेमंत शाह जी, जिनसे भी बहुत पुराना हमारा संबंध है, पाटिल साहब, गुजरात अर्थशास्त्र परिषद के अत्यंत सम्माननीय सदस्यगण, अध्यापक, अतिथियों और प्यारे छात्र छात्राओं, ये मेरे लिए अत्यंत सुख, संतोष और सौभाग्य का विषय है कि आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। मोहन भाई से हमारा आत्यंतिक संबंध है, आज से नहीं, दशाब्दियों पुराना, और कम से कम दशाब्दी में 10 बार तो आमंत्रण मुझे दे चुके यहाँ पर आने का, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य था कि यहाँ पर नहीं आ पा रहा। इस बार बहुत ही इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप आइए, गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन की बैठक तो गई, लेकिन साथ साथ पूरा इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन भी आने वाला है, तो दोनों ही स्वार्थ हमारे एक साथ सिद्ध हुए यहाँ पर आकर के। इसमें मोहन भाई पटेल धन्यवाद देना चाहूँगा। वैलिडिटी फंक्शन की बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन एक अच्छाई सबसे अच्छी होती है कि लोग समझते हैं इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसलिए प्रसन्नता होती है। बाकी सारे सत्रों के बाद में प्रथम सत्र होगा तो दूसरा, तीसरा कुछ न कुछ होगा, ये समापन सत्र के बाद में कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय होता है। और गुजरात में ये पहला अनुभव हुआ होगा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में समापन सत्र में लोग उपस्थित हैं, नहीं तो उद्घाटन सत्र में तो संयोजकों को बड़ा प्रयास करना पड़ता है, प्रदर्शन भी करने के लिए आवश्यक होता है कि अच्छी मात्रा में लोग इकट्ठे हैं, और उद्घाटन सत्र संपन्न होते ही संयोजक अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है। अब तो
तो अच्छा हो गया कार्यक्रम, इससे आगे कोई जरूरत नहीं है। बाकी सत्र अपने आप चलते चले जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स लोग प्री टेक ऑफ से लेके टेक ऑफ कर गया तो अपने आप सब चलता चला गया। लेकिन बहुत अच्छी उपस्थिति में यहाँ पर आप सभी लोग समापन सत्र के साक्षी हैं, इसके लिए भी संयोजक विशेषकर मोहन भाई को बधाई और उनके जितने टीम मेंबर्स थे सबको बधाई देना चाहूँगा। मोहन भाई जब परिचय करा रहे थे यहाँ पर तो बड़े परिचय करा रहे अर्थशास्त्री के रूप में, और मेरे बारे में 2 ही 3 चीजें बताई उन्होंने। जैसे मुझे अर्थशास्त्र नहीं आता है, मैं सिर्फ उद्योगपति हूँ या एक चीज 2 चीजें, ऐसा नहीं, अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत मुझे आता है। यहाँ विषयों पर चयन किया गया वो भी बहुत ही अच्छा था। सोशल एक्सक्लूजन की बात करें, साथ साथ सोशल प्रोटेक्शन की बात, इकोनॉमिक थ्योरी कैसे कर सकती है इसके लिए। और दूसरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रखा गया है इसमें कि पूंजीवाद, समाजवाद और प्रजातंत्र के मध्य अंतर संबंधों की जो चर्चा पर आधारित है। तो सलारीवाला जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जैसा कि पर्चियस ने अपना यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपसे कहूँगा। ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र जिससे कि हम अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का विषय बनाते चले जाते हैं, उसके पीछे एक चिंतन है, एक दर्शन है, और निश्चित तौर पर चिंतन दर्शन हमारा अपना नहीं है। एडम स्मिथ से बात शुरू करें और अभी तक जो भी चलता चला आ रहा है, उसमें पाश्चात्य चिंतन और पाश्चात्य सोच, पाश्चात्य दर्शन ही उसको प्रभावित करता चला आ रहा है। पूंजीवाद की बात करें या समाजवाद की बात करें या सोशल एक्सक्लूजन की बात करें या सोशल प्रोटेक्शन की बात करें, सब में कहीं न कहीं एक चिंतन हमारे पास में आ रहा है, और उसी को लेकर के हम आगे विस्तार चर्चा करते हैं। पूंजीवाद या समाजवाद, दोनों की दृष्टियां यदि हम देखें तो आप पाएंगे कि भौतिकवादिता दोनों में ही है, दोनों में ही पदार्थ है, दोनों में उपभोग है। एक मैटर पर स्वामित्व की बात करता है, कैपिटल की बात करता है, और दूसरा मैटरिस्टिक इंटरप्रिटेशन की बात करता है। बिना पदार्थ के दोनों का अस्तित्व नहीं है। यदि मान ली कुछ अंतर है तो स्वामित्व को लेकर के थोड़ा है। एक व्यक्तिगत स्वातंत्र को महत्व देता है और दूसरा एक समाज को, राज्य के स्वामित्व की बात करता है। लेकिन मूल में वही उपभोग की वृत्ति है, मूल में वही पदार्थ है, और दोनों में सतही दृष्टि पर ही कुछ अंतर है। अंतःकरण में जाएंगे तो कोई अंतर नहीं है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्रजातंत्र भी उन्हीं की परिभाषा, उन्हीं के तत्वों के आधार पर ही हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा लगता है कि भारतवर्ष में कोई प्रजातंत्र रहा ही ना हो। यदि मुझे अनुमति हो कहने के, मैं कहूंगा भारतवर्ष में जितना अच्छा, स्वस्थ, पुष्ट प्रजातंत्र भारतवर्ष में था, उतना विश्व में किसी भी सभ्यता में नहीं रहा है। चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश का शासन रहा हो, हम अपनी आत्मा की आवाज से संचालित होते थे। हमने अपने सामाजिक निर्णयों को अपने आप लिया है, हमने अपने आर्थिक निर्णयों को अपने आप लिया है, हमने अपने राजनीतिक निर्णयों को भी अपने आप लिया है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, जिसकी धरती पर आज हम यहाँ पर खड़े हुए प्रणाम करते हैं, उस महान शब्द को कहता था, भारतवर्ष 7.5 लाख गणतंत्रों का राष्ट्र है। गणतंत्र जो रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 को हमने यहाँ पर प्रदान किया, उस गणतंत्र की बात महात्मा गांधी कहते हैं। 7.5 लाख गांव जो हमारे और रिपब्लिकन स्टेट है, जैसे कि बड़े बड़े स्टेट हुआ करते, क्योंकि सारे के सारे निर्णय खुद ले लिया करते थे। वो बात कहाँ चली गई? हम तो प्रजातंत्र 5 साल में एक बार देखते हैं, वो भी यदि बी आर अम्बेडकर न होते तो शायद एक व्यक्ति के सर पर एक वोट की बात न होती। तरह तरह के उनमें भी कुछ वेट्स रख देते, भाग रखते थे, और एक व्यक्ति को कुछ, दूसरे व्यक्ति को कुछ, तीसरे व्यक्ति को कुछ, और इस प्रकार के वेट्स चले जाते हैं। कहाँ चला जाता है वो प्रजातंत्र 5 सालों चुनाव के बाद में? कहीं संसद में सिमट के हो जाता है, कहीं विधानसभाओं में सिमट के रह जाता है, और कहीं परिषदों, नगर परिषदों में सिमट रह जाता है, कहीं कुछ नौकरशाहों के हाथ में सिमट रह जाता है, और कहीं न्यायालयों में सिमट के रह जाता है,
और कहीं कुछ सांसद इत्यादि लोग वहां में छूट रह जाता है। एक आम जनता जिस प्रजा में प्रजा की बात होती है वो प्रजातंत्र प्रजा के पास नहीं आ पाता है, क्योंकि जिस पूंजीवाद और समाजवाद की देश हम उपजाना चाहते प्रजातंत्र प्रदान करना चाहते प्रजातंत्र, वो प्रजातंत्र हमको प्राप्त नहीं पाता है। भारतवर्ष ने एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें कि राज्य की सत्ता तो थी, स्टेट था, लेकिन स्टेट से ज्यादा सत्ता का जो केंद्र था वो जनता रही है, समाज के पास में सत्ता थी और समाज सारे निर्णय लिया करता था अपने धर्म के अनुसार। धर्म संचालित करता था अपने व्यवहार को, धर्म नियमन किया करता था राज्य के व्यवहार को। राजा को भी पूरी स्वतंत्रता नहीं होती थी कि वो क्या निर्णय लेता है, व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए भी राजा के पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की कल्पना हमारे पास में थी, वो स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी एंड वीक स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास में था। राजा को भी अपनी राज सत्ता बचाए रखनी होती थी तो भेष बदल करके जनता के पास में जाता था उनकी परेशानियां पता लगाने के लिए, और अकबर से बड़ा कोई राजा हुआ नहीं, अकबर द ग्रेट कहते हैं, वो भी ये काम किया करता था। राजा को मंत्रिमंडल जो सलाह दे दिया करते थे, चंद्रगुप्त को भी स्वतंत्रता नहीं थी वो शादी कहाँ करे, उसका व्यक्ति निर्णय था शादी कहाँ करना नहीं करना, लेकिन चाणक्य ने कह दिया वो शादी नहीं करना तो नहीं करेगा। इस प्रकार के निर्णय, राजा के निर्णय भी उनके दिए गए मंत्रिमंडल और जो जनता की जो ताकत हुआ करती थी उससे संचालित होता था। मुझे लगता है प्रजातंत्र सबसे बड़ा प्रजातंत्र कही है। आज के कार्य को प्रजातंत्र को दिखाई नहीं पड़ा और हम चाहें कि कैपिटलिज्म के माध्यम से प्रजातंत्र आ जाए। कैपिटलिज्म के जिसके केंद्र पूंजी है, मानव तो है ही, श्रम तो है ही, या सोशलिज्म के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि प्रजातंत्र आ जाए जिसके केंद्र में श्रम है और दूसरे तत्व नहीं है। इन दोनों के माध्यम से एक कांगीय प्रजातंत्र आ पाएगा, सर्वांगीण प्रजातंत्र नहीं आ पाएगा। सर्वांगीण प्रजातंत्र हमारे हिसाब से आएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। हमने श्रम को भी महत्व दिया है, हमने पूंजी को भी महत्व दिया है। श्रम और पूंजी को बराबर का एक संतुलनकारी महत्व जिस व्यवस्था ने दिया है वो भारतवर्ष की अपनी व्यवस्था है, इससे तरह कोई भी दूसरी व्यवस्था नहीं है। एक तरफ पूंजीवाद में पूंजी यहाँ तक पूंजी है, ये पूंजी जो कृत्रिम वस्तु कहते हैं, कृत्रिम वस्तु ने जितनी भी वास्तविक वस्तुएं हो सकती हैं, चाहे श्रम हो, चाहे भूमि हो, चाहे संतन हो, साहस हो, सबको खरीदने की क्षमता अर्जित कर रही है। या श्रम की बात इतनी कह दी जाए कि उद्योग धंधे ही चौपट हो जाए श्रम आंदोलनों के नाम पर, इन दोनों से कल्याण नहीं होने वाला है, इन दोनों से प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होने वाली है। यदि आप ये माने कि शुरू में विकास की दर अच्छी होगी लेकिन साथ ही साथ कुछ गरीबी भी रहेगी या हमारी असमानताएं भी रहेंगी, जिसकी के बाद हमारे इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक प्रेसिडेंट क्या करते थे, यदि हमारी मॉडल में ही ऐसी कमी है, यदि मॉडल में ही ऐसी कमी है जिससे कि इनइक्वालिटी लेट ग्रोथ होगी, तो वो जो मॉडल की कमी रहेगी तो कभी भी इनइक्वालिटी दूर नहीं हो पाएंगे। यदि हमारे 60 साल के विकास के अनुसार भी यदि हम जिस मॉडल में काम करते हुए चले आ रहे हैं उसके आधार पर इनइक्वालिटी दूर नहीं हो पा रही है, जिस मॉडल से कंसंट्रेशन बढ़ा, जिस मॉडल से डिस्पैरिटीज दूर नहीं हुई बल्कि कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन फोर्सेस बढ़ती चली जा रही है, देश में 56 खरबपति पैदा कर देते हैं और लाखों लोग करोड़ों लोग ऐसे जिनको 20-25 प्रतिदिन की आमदनी नहीं मिल पाती है। जिस मॉडल ने ये परिस्थिति ला दी है उस मॉडल के आधार पे आप कहीं अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमको अच्छी ग्रोथ रेट मिल जाए और इनइक्वालिटी भी दूर हो जाए, पॉवर्टी दूर हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं बंधुओं। उस मॉडल में ही कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस हैं और वो वीकनेसेस हमको दूर करनी होगी और वो दूर नहीं हो पाएंगे हम इस जो पाश्चात्य हमारे पास चिंतन उसके आधार पर, तो हमें अपना खुद का चिंतन विकसित करना होगा। सुबह जब व्यास जी अपना भाषण दे रहे थे उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ पर बातचीत की, अनो भद्रात्मतो सर्वदा की बात की। आज विवेकानंद का जन्मदिन भी है जिसकी बात यहाँ पर कही गई। विवेकानंद क्यों हम पूछते हैं, विवेकानंद कोई ऐसे ढोंगी या पाखंडी सन्यासी नहीं थे, he was a practicing spiritual और spiritual practitioner। वो एक वेदांती समाज विज्ञानी कह सकते हैं। उन्हें समाज की समस्याओं को आत्मसात किया था, उसको ग्रहण किया था और ग्रहण करके अपना मॉडल उन्होंने बनाया था। वो मॉडल कोई नहीं था, वो मॉडल वही जो गांधी का मॉडल था। गांधी
भी उसी की बात करते हैं जिसकी विवेकानंद ने बात की थी, और वो मॉडल है आध्यात्मिक मॉडल। और जब तक उस आध्यात्मिक मॉडल की बात नहीं करेंगे, जो आध्यात्मिकता के तत्व हैं उनको हम अपने अर्थशास्त्र में नहीं पिरोएंगे, जिसमें कि मानव का अंतर नहीं रहता है, जिसमें कि क्षेत्र का अंतर नहीं रहता है, जिसमें कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष और सामान्य गांव के रहने वाले व्यक्ति में अंतर नहीं होता है, या सामान्य गांव में रहने वाले व्यक्ति को मिट्टी के तेल लेने में कितनी तकलीफ होती है, वो केंद्र योजना का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता है उसको पता रहता है। जब तक ये बात नहीं हो पाएगी तब तक आप चाहेंगे ग्रोथ भी हो जाए, सोशल जस्टिस हो जाए, सोशल एक्सक्लूजन दूर हो जाए और सोशल प्रोटेक्शन मिल जाए, ये नहीं हो सकता है। जब तक एक लॉन्ग टर्म में अप्रोच हमारे पास नहीं होगा, एक पर्सपेक्टिव प्लान की बात पहले कहेगी, पर्सपेक्टिव प्लान में कोई बात नहीं करता है, एक लॉन्ग टर्म में अप्रोच नहीं हमारे पास होगा, जब तक कंप्लीट सोसाइटी में एकात्मता की बात नहीं होगी, जब तक कि हम प्रत्येक क्षेत्र को अपना क्षेत्र नहीं मानेंगे, जब तक प्रभुत्व को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जब तक किसी प्रकार कोई अहंकार नहीं होगा हमारे मन में, तब तक समझिए कि बात बन नहीं पाएगी। साथियों, आवश्यकता इस बात की है कि जो तकियानुसिक तरीके हैं पूंजीवाद और समाजवाद को पढ़ने और पढ़ाने के, उनको मुखातिब अर्थशास्त्र का जो चिंतन है जिसने हमको कमजोर बना दिया, जिसने हमको दुर्बल बना दिया, उपभोगवादी बना दिया, भौतिकवादी बना दिया, स्वार्थी बना दिया है हम लोगों को, ऐसे अर्थशास्त्र उनकी परिभाषाओं को उखाड़ देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम रॉबिन्स को लेकर के ही हम कहेंगे रॉबिन्स की परिभाषा ही अंतिम परिभाषा है जो कहती है आवश्यकताएं अनंत हैं। कौन कहता आवश्यकता अनंत है? आवश्यकता अनंत तो न कभी थी न कभी हो सकती है। हम उस पर यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आए हैं। हमें आवश्यकता इस बात की अर्थशास्त्र परिभाषा से लेकर के अभी तक जिस प्रकार की मेथोडोलॉजी है अर्थशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की, उस पर भी हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। और ये सोच यदि हम सोचें कि IIT में और दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जैसी संस्थाओं में बैठ कर विकसित होगा तो भूल जाइए। वहां तो करियरिस्ट बैठे हुए इकोनॉमिस्ट है नहीं। हमारे प्रोफेसर कहा करता था कि हमारे पास इकोनॉमिस्ट थे तो करियरिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट तो वो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करें, हम तो उद्योगों की बात करते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो सकते हैं, पूरी इकोनॉमी को लेकर जो चिंतन करता है ऐसे इकोनॉमिस्ट हमारे पास में है नहीं। ऐसे इकोनॉमिस्ट पैदा करेंगे मोहन भाई पटेल। ऐसा इकोनॉमिस्ट चिंतन होगा गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन के माध्यम से, जहां पर कि हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम आत्मालोचन करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। हमें इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड कुछ मॉडल बनाना होगा। एक्सट्रोस्पेक्शन तो निरंतर करते चले आ रहे हैं, हम परापेक्षी होते चले आ रहे हैं। आइए आज के दिन इस समापन अवसर पर हम कुछ संकल्प लें कि जो अर्थशास्त्र हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है, जो अर्थशास्त्र हम पर लागू नहीं होता वो सामने वाले पे कैसे लागू होगा। ये है आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र बिंदु। हम सोचें कि जब हम चार लोग जाते हैं एक साथ किसी दुकान पर चाय पीने के लिए और चार के चारों ही चाय के पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं और एक देता है और चार के चारों को सरप्लस का अनुभव होता है, जो देता है उसको भी सरप्लस का अनुभव होता है, उस कंज्यूमर सरप्लस को क्यों नहीं बढ़ाते? बहुत बहुत धन्यवाद। Past President, Indian Economic Association. Namaskar. Respected Chairman, dignitaries on and off the dais, my friends, colleagues, and dear students and delegates for the Gujarat Economic Association Conference, in which I have been kindly invited to have a few words before you in this closing ceremony of the grand conference that we have observed during the last 3 days. Actually speaking, myself is associated with another regional association conference very much, that is Bengal Economic Association, for the last 33 years. And for that reason, I know personally how difficult and at the same time how rewarding
is organization of a regional economic association. With the experience of these, organizing and participating in regional economic association, I had the opportunity of serving our National Economic Association for a number of years, both as a secretary and treasurer and also as a president. And so it is my pleasure that now today I am standing before you just to exchange a few words on this particular occasion. In the valedictory function, it is usually, the convention is to say a few good words about the organization, about the occasion, about the substance, and about the future. I like to mention in this context that if we start with our Indian earliest economist, that is Kautilya, then we can see that Kautilya has mentioned how important artha or money is. You know that before attainment of moksha, the other objectives of human beings are dharma, artha and kama. And if we cannot manage our artha in a good manner, judiciously and wisely, then neither dharma nor kama will be possible. If we start with this advice of Kautilya, then we can see how we should engage our attention in the proper management of money and in that way the economy. In this context, coming to the modern age, I had an opportunity for this today in the morning to go to a place which may be considered as one of the greatest places of pilgrimage for all sons of soils of this country. That is the birthplace of Sardar Vallabhbhai Patel. There I found the memorial of Sardar Vallabhbhai and his elder brother, Vittalbhai Patel's memorial, where it has been inscribed particularly, which actually inspired me also, that the objective of Sardar Patel was anything to do, only objective to serve is to give more and more power to India. His objective was to do anything and everything by which power to India will be obtained. This power is not only political power, this power is also an economic power, and this power is also moral power. The second sentence that has been mentioned there, that is also important, that Sardar Patel said that education is important, but if education does not build the character, then that education is useless. That is the sermon of Sardar Patel, which I like to mention here also, for the simple reason that last night when I was discussing the present current state of affairs in Indian educational field with some of my colleagues, like the arrangement of teaching in colleges, the policy of lawyers, the doctors in our society, we are rather ashamed to find that there is the lack of character and also rampant corruption everywhere. So naturally, if we want to give more and more power to our country, we shall also have to strengthen our character, remove our corruption. Whatever way, I don't know. Actually speaking, we, at the fag end of our life, we tried to serve our country, but certainly we could not succeed. But therefore, we must
place our hope not on the past or on the present, but on the future. That is on you, on the students, on the youth, who will build the new India in the years to come, where India will emerge as a superpower and as a really ideal to stay. In this context, I shall also bring here a latter icon, so far as economists are concerned. That is the name of Professor P.R. Brahmananda. Professor P.R. Brahmananda's name I am bringing just to ensure the relationship of the present students to the ideas and thoughts of Professor P.R. Brahmananda. It should be remembered, you should know also, that he was the initiator of an economic model called wage goods model. And in this year, Dr. C. Rangarajan gave Professor P.R. Brahmananda Memorial Lecture in Visakhapatnam Indian Economic Conference, where he has mentioned that if wage good models would have been accepted by the new government of India during independence, then certainly the growth rate of India that India achieved in the early years would have been much higher. In fact, if the wage goods model could have been accepted, in fact it was not accepted by the government of India. Vakil and Brahmananda tried to push for that model. Even the planning commission model was not also accepted, but the government accepted a model prepared by Maulana Vish and others, which was supported by Pandit Nehru, and this model was started as the initiator of 5-year plans. One thing that is lacked here, that this model placed on economic growth, emphasis on economic growth, but lacked any importance on the distribution of the additional income generated through growth among the people. So what happened? Actually, the problem of India is that India is growing, but at the same time, still India is the largest habitat of poor people in the world. India is now registering a growth rate of 8%, 9% and aspires to register a growth of 10%. But at the same time, during 2001 to 2005, we find, according to Arjun Sengupta report, that 77% of Indian population are unable to spend more than ₹20 per day. So in this situation, therefore, we should take care of what should be the proper economic policy. I can't refrain myself to quote a joke in this matter. Many of us, we know, but students do not know. It was mentioned by Professor Brahmananda. One day, actually you know that the government of India is rather disturbed with the problem of poverty. So, both in not only India but also Pakistan, all of them are facing this problem. So what happened? One day, finance ministers of India and Pakistan went to God to ask God when the poverty problem will be solved. First of all, the finance minister of Pakistan asked God when the Pakistan's poverty will go. God answered, not before your death. Pakistan's finance minister was younger to India's finance minister. So India's finance minister became hopeful and asked God, when India's poverty will go? God answered, not before my death. In this context, therefore, one of our serious problems is this: how to remove the poverty. We have tried to do so. Again I am saying that we could not do that till now. So therefore, the students also should come out, as has been mentioned, that now the students are being prepared. They should take care of this problem. In this context, I may say that I like to recite one particular
line of Rabindranath Tagore, whose 150th birth centenary we have celebrated just now. It has been mentioned, "Tumi jare paschate rakhicho, she tomare paschate rakhiche." Whom you are keeping below, he is dragging you below. If you put the people in the darkness of poverty, then certainly light cannot shine on your forefront. So, not only we should look forward to growth and growth only, but we should also give emphasis to the distribution, the removal of poverty, so that we can wipe out tears from every eyes and make everyone happy and healthy as far as possible. Thank you. वाजपेयी जी ने और आर के सेन साहब ने और अंतिम बात कही कि पॉवर्टी कब खत्म होगी, तो गांधी जी ने तो ये कहा था कि गरीबों की गरीबी दूर करनी है, उसमें अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रियों की जरूरत क्या है। तो आज का जो अर्थशास्त्र है वो अनर्थशास्त्र है। अब हम सब इस अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता कि अर्थ करते हैं या अनर्थ करते हैं। लेकिन ये सब तो मोहन की लीला है। इस गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन की 45वीं परिषद में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट श्री मोहन राव जी, उनके मंत्री श्री अनिल कुमार ठाकुर जी और सभी इसके कारोबारी के या एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य यहाँ उपस्थित रहे, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ यहाँ जो दो विषय सोशल एक्सक्लूजन और सोशल प्रोटेक्शन इन गुजरात और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के बारे में जो यहाँ सारी चर्चाएं थी, इस चर्चा में जो लोग शामिल हुए, खास करके इसमें जो की पेपर रखने वाले सभी हमारे बुजुर्ग दोस्त और सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में 3 बहुत अच्छे वक्तव्य हमारे यहाँ पेश किए गए। इलाबेन भट्ट ने और लीलाबेन बिसारिया ने और जयनारायण व्यास ने आज बहुत अच्छे वक्तव्य हमारे सामने हुए। उन सब से हम सहमत हैं नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन एक डायलॉग खड़ा हो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक डायलॉग खड़ा हो, हमारे बीच में एक बात ये रखी जाए, एक बात रखी जाए और कम से कम हम उसके बारे में कुछ चर्निंग करें, कुछ हमारे दिमाग में चलता रहे, इसके विचार हमारे सामने रखे गए। इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो पैनलिस्ट रहे, सुनील पारेख जी, इंदु कुमार जानी जी और महेश पंड्या जी, उनके लिए भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। इस गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस के साथ सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से जो मैगजीन निकाला गया, हमारे सामने आया, बहुत अच्छी तरीके से निकाला गया, बहुत कम समय में निकाला गया, फिर भी अच्छा हुआ, ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। हम चाहते हैं कि ऐसे एकेडमिक डिस्कोर्स हमारे यहाँ चले। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि हुई, जैसे गुजराती में अर्थ संकलन, अंग्रेजी और गुजराती में विश्लेषण, ऐसे जो मैगजीन हमारे यहाँ चलते हैं उसमें एक और एडिशन हुआ है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। इसके लिए मैं सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट का
भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। भिखू भाई पटेल जो अभी नहीं है, सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से उन्होंने जो ये फ्री मार्केट में फ्री हैंड भी होता है, तो जो फ्री हैंड दे के रखा है मोहन भाई को, भिखू भाई, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सभी एजुकेशन ट्रस्ट ऐसे नहीं होते, मैं जानता हूँ। तो जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि ट्रस्ट जो अपने प्रिंसिपल के ऊपर और उसके जो साथी हैं सब अध्यापकगण, उनके ऊपर जो विश्वास रख के चलते हैं, ऐसे विश्वास रख के चलने वाले बहुत कम ट्रस्ट होते हैं। इसलिए मैं भिखू भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने कल जब उनसे मुलाकात की थी, बात हुई थी यहीं पर, तो मैंने उसी वक्त उनका आभार प्रदर्शित किया था। सबसे बड़ी बात तो मोहन भाई ये भी होती है ना कि खाना अच्छा हो। बहुत अच्छा खाना हुआ, आपका तो शुक्रगुजार हूँ, रसोइये का भी शुक्रगुजार कि इन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया। सभी सेशंस में जो एंकर पर्सन्स हमारे सामने हुए, दोनों टेक्निकल सेशन में और उद्घाटन और समापन अवसर पर भी, उन सब का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। साथ साथ मोहन भाई का तो आभार होगा ही, क्या शब्द हैं इनके लिए, पता नहीं, सारी गीता बोलनी पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ 2 दिन कल्चरल प्रोग्राम हुआ। वो हिंदी वाली बहन कहाँ है? नहीं दिखाइए, हिंदी वाली बहन, अच्छा, प्रतीक्षा बहन और सुचिता, उन दोनों का मैं आभार मानता हूँ जो विद्यार्थीगण उसमें शामिल हुए और उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे सामने पेश किया, उनका शुक्रगुजार करता हूँ।